Hello students, myself Bashir Ahmed. Now, today I am going to teach you another topic in French revolutions, and the topic is peasant revolt. And today we discuss another topic, recognition of National Assembly. Now the recognition, it means recognize the National Assembly. Now first let's start the peasant revolt. The countryside rumors is spread. It means entire country. A rumor spread from village to village that their rib crop would be destroyed by hired bands of lords of manors. A rumor spread entire France that their rib crops would be destroyed by the hired bands of lords of manors. People afraid. Peasants in several districts seized hoes and attacked the residents of their manors. Owner in the sense peasant work for that land, and their owner of the land is a landlord. It means peasant work for others' land and the owner of that land is lords. So peasant feel that their land, their rib crop would be destroyed by the hired bands of lords of manors. Then peasants in several districts seized hoes and attacked the residents of their manors, and they attacked of their manors. They looted food grains, hoarded, collect them, and burn down documents containing records of their manorial dues, rent and other documents, related documents burned by the peasants. They looted, hoarded grain and burned down the document containing records of manorial dues, that kind of dues of peasant. They burned document containing records of manorial dues. So peasant afraid that why? Because entire France there was a rumor that their rib crops would be destroyed by hired bands of lords of manors, and the owner of the land destroyed their rib crops. Ultimately, result of this rumors, peasant in several districts seized the hoes and attacked the residents of their manors. It means their landlords. They attacked their residents. They looted, hoarded, captured food grains and burned down the document those are related to manorial dues. Now, after this revolt, King Louis XVI afraid. So then another topic, recognition of National Assembly. In a previous video we discussed about the National Assembly. Third state walked out from the meeting of States Generals and they declared themselves as a National Assembly. So when the people revolted, Louis XVI finally gave recognition to the National Assembly. It means Louis XVI accept the demand of third state or a National Assembly. Why? Because of that third state declared themselves as a National Assembly. And also they accept, it's an important thing, his power now would be checked by the Constitution. It means their power and functions limited and also set by the Constitution. They accept all powers and functions, those are set by the Constitution of France.
It means they accept constitutional monarchy. On 4th August 1789, the National Assembly passed a law. On 4th August 1789, passed a law abolishing ban on federal system and taxes. Members of the clergy too were forced to give up members of the clergy too were forced to give up their privileges. You know that the first and second state have got privileges and they never paid any kind of taxes. According to this act, abolishing the federal system and taxes, also the members of the clergy too were forced to give up their privileges those have got according to the divine right. Also, tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated or captured by the government. Confiscated, it means captured by the governments. You know that more than 60% land occupied by the church and their officers. So after this act, government seized and confiscated the land those are acquired by church. Now ultimately the government acquired asset worth 2 billion livres. After this act captured the property of church, government acquired asset and their value is more than 2 billion livres. Now today we discuss next topic, peasant revolt and the recognition of assembly. आज हम नया टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पीजेंट रिवोल्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। किसानों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि पूरे कंट्री में गांव टू गांव जो है ये अफवाह फैल गई, रूमर्स फैल गया कि जो पकी हुई फसल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा लैंडलॉर्ड्स के हायर्ड पर्सन के थ्रू। तो पीजेंट जो थे सेवरल डिस्ट्रिक्ट वो सीज्ड होज, वो सीज कर दिए गए। कुदाली वगैरह जो उनकी थी वो सीज कर दी गई, कुदाली लेकर, और अटैक्ड रेजिडेंट्स ऑफ देयर मैनर्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके रेजिडेंट्स पर उन्होंने अटैक किया। दे लूटेड, लूटा, और जो अनाज था उसे जब्त कर लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके किराए से रिलेटेड जो फीस के डॉक्यूमेंट्स थे जिस लैंड पर वो रह रहे थे लैंडलॉर्ड के, वो मैनोरियल ड्यूज जिसमें जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि उनका कितना कर्जा है या इस तरीके की चीज़ें, उनको उन्होंने जला दिया। यही वो पीजेंट रिवोल्ट है। अब रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली, इस एक्शन के बाद, पीजेंट के इस एक्शन या रिवोल्ट के बाद लुई 16 ने रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी नेशनल असेंबली जो कि थर्ड स्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था उसे जो है रिकॉग्नाइज कर दिया, सहमति दे दी उसके लिए, और साथ में एक और सहमति उसने दिया कि उसके जो पावर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। इट मींस एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी संवैधानिक राजतंत्र जिसको कहते हैं वो एस्टैब्लिश करने की बात कही गई। ऑन 4th August 1789 द नेशनल असेंबली पास्ड, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक टैक्स पास किया गया जिसके एबॉलिश यानी प्रतिबंध लगाया गया फेडरल सिस्टम पर। फेडरल सिस्टम मेडोल पीरियड में जिसको सामंतवाद कहते थे कि जमीन के टुकड़े वो अपने लोगों को देता था जिस पे वो काम करते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी, और जो लैंडलॉर्ड था उसकी जमीन प्रोटेक्ट भी होती थी। इसी को आप फेडरल सिस्टम कहते थे। इसको एबॉलिश किया गया और जो टैक्सेस थे उसे भी रिमूव किया गया। जो मेंबर्स ऑफ क्लर्गी क्लास के जो लोग थे उन्हें फोर्सफुली उनके जो राइट्स थे उन्हें गिव अप करने को कहा गया कि वो अपने जो प्रिविलेजेस थे, जो अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट यानी दैवीय अधिकार के तहत जो उनको विशेष अधिकार मिला हुआ था वो उन्हें छोड़ दें। टीथेज वेयर अबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च, टीथेज जो टैक्स था उसको भी अबॉलिश किया गया, प्रतिबंध लगाया गया।
और लैंड्स ओन्ड बाय चर्च, चर्च ने जो लैंड ओन कर रखा था, ले रखा था, आप जान रहे हैं लगभग 60% जो है लैंड जो है ऑक्युपाइड कर रखा था चर्च ने, उसको गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केटेड यानी छीन लिया, जब्त कर लिया। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसके बदले जो एक्वायर्ड एसेट था, उसकी जो वैल्यू थी वो लगभग 2 बिलियन लिवरेज के बराबर थी। इस तरीके से पब्लिक पीपुल के रिवोल्ट करने पर और पीजेंट के रिवोल्ट करने पर, लोगों के पार्टिसिपेट करने पर अल्टीमेटली एक डिस्पोटिक रूलर्स को, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और उस यानी एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अलाउ करना पड़ा और अपने पावर्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े। यानी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची की तरफ फर्स्ट स्टेप उठाया गया। हम पूरा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें जो मोनार्चियल सिस्टम है उसमें आप मोनार्चियल से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची से रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म होगा। रिपब्लिक क्या होता है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर रिपब्लिक से वो डिक्टेटरशिप में फॉर्म होता है। फिर अगेन वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सेटअप होता है। तो ये एक जर्नी है जो मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची से रिपब्लिक, रिपब्लिक से डिक्टेटर ट्रांसफॉर्म होती है। सो नाउ दैट इज द टॉपिक, पीजेंट रिवोल्ट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली।